Hare Krishna. Timidandasya Gananjana Shlakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shigurave Namaha. We offer our respectful obeisances unto our spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who so kindly opened our eyes with a torchlight of knowledge while we were blinded in the darkness of ignorance. मैं अपने गुरु ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रणाम कर रहा हूँ, जिनके द्वारा मेरे जो अज्ञानता नष्ट हुआ है और मुझे प्रकाश ज्ञान मिलाया है. So we are very happy to be here at this initiation ceremony, name-giving ceremony, and Vanaprastha ceremony tonight. आज गुरुदेव बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि यहाँ पर दीक्षा समारोह है, नामकरण संस्कार है और एक वानप्रस्थ जो समारोह है, ये तीन समारोह हो रहा है. Especially we're enlivened to see how many young people are taking up this Krishna consciousness movement. गुरु महाराज जी को प्रसन्नता से आनंद से भरपूर है कि कितनी युवक पीढ़ी जो है वो दीक्षा समारोह में बैठी है. This means that our Krishna consciousness movement will have a very good future. इसका अर्थ है कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत है, इसका जो भविष्य है बहुत सुंदर और उज्जवल रहेगा. Successful religious societies always place as first priority taking care of their youth. बताया गया सबसे महत्वपूर्ण समाज वही है जो अपने न्यू पीढ़ी के ऊपर ध्यान रख रहा है. Of course, I mean, just like one devotee here, Arjuna is taking Vanaprastha, we take care of the older people too. और जो वृद्ध लोग हैं उनको भी हमें ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर एक अर्जुन दास प्रभु बैठे हैं जो वनप्रस्थ ले रहे हैं. And Vedic society means basically taking care of the women, children, and older people. जो हमारा समाज है इसका अर्थ है कि हमें वृद्ध लोगों का, माताओं का, छोटे बच्चों का सबका ध्यान रखना पड़ेगा. So the youth, of course, represent our future. जो न्यू पीढ़ी है वो हमारा भविष्य है. So when I joined the Krishna consciousness movement many years ago, we were all young. गुरु महाराज कहते जब मैं कृष्ण भावनामृत में आया बहुत साल पहले मैं बहुत युवा अवस्था में था. Basically, no one was over the age of 25. उस समय 25 वर्ष से कोई था ही नहीं, सब उससे छोटे थे. And it was a lot of fun to join the movement. It was like a festival every day. और उस समय बहुत आनंद होता था, ऐसे लगता था हर दिन एक उत्सव है. And by the wonderful arrangements of the devotees here, especially Rasvi Hari, Hans Avatar and family, and Jai Jagadish, of course, you are making Krishna consciousness like a festival here every day. गुरु महाराज कह रहे हैं लबासा के सभी भक्तों के द्वारा रोज दिन प्रतिदिन ऐसे लग रहा है यहाँ पर उत्सव हो रहा है. This is actually what Srila Prabhupada wanted. He wanted Krishna consciousness to be joyful and like a festival. यही चीज श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारा हर एक दिन आनंद से भरपूर रहे और एक उत्सव की तरह हमारा जीवन बहते. Just like here, you were celebrating, I think, 4 days of Holi. जैसे यहाँ पर 4 दिन से गुरु महाराज कहते हैं होली का त्योहार को अनुभव कर रहे हैं. And everyone is having fun. सभी लोग आनंद से भरपूर हैं. And every time I come here, there's another fun festival going on with tons of prasadam being distributed and the chanting of Krishna's holy names. गुरु महाराज कहते हैं मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पर नए उत्सव होते हैं और साथ में कई रकम के प्रसाद बनते हैं, वितरण होता है, ये सब मैं देख रहा हूँ. So I want to thank the devotees for doing such a nice job and inspiring each other and also inspiring me in Krishna consciousness. मैं सभी लबासा के भक्तों को धन्यवाद दे रहा हूँ जो तुम दूसरे को उत्साहित कर रहे हो और गुरु महाराज के मैं भी उत्साहित हो रहा हूँ. So you have actually revealed the secret of Krishna consciousness, that to always be joyful and to cooperate and have loving spirit amongst the devotees. जो आपका गुह्यन विचार भावना आपने है वो आप प्रकट कर रहे हो. The test of our chanting properly is that we actually have love for each other. हम जब भी अच्छी तरह से भगवान के नाम जप करते हैं, उसका क्या परिणाम होने वाला है कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करेंगे. Just like it's described about the qualities of a Vaishnava,
by our Lord Kapila Dev, Tatikshava Kurunika Surada Sarvadehinam, Ajata Shatrava Shanta Sadava Sadabhushana, that Lord Kapila Dev says the Vaishnava is first of all tolerant. You can read. जो कपिल देव भगवान है श्रीमद् भागवतम में वर्णन कर रहे हैं कि भक्तों का क्या क्या गुण है और उनमें से प्रथम गुण बताया गया है सहनशीलता होना चाहिए. Karunika, he's full of compassion and mercy. और करुणा से भरा रहता है. Surada Sarvadehinam, he's a friend of all living entities. और वो सभी के साथ मित्र की भावना को प्रकट करता है. And very important, Ajata Shatrava, he does not have any enemies. और सबसे प्रमुख बात है कि उसके पास कोई शत्रु नहीं है. And then peaceful, Vaishnava is naturally peaceful, and then these are the ornaments of real Vaishnavas. और बहुत शांत भाव का ये सब गहना है भक्तों का. So I can see by examining objectively that the devotees here have these ornaments, and you have made this such a nice society that even the children are enthusiastic, like we have little Parthasarthi, who's so enthusiastic to take initiation. I mean, he's probably chanting like 64 rounds a day about this time. गुरु महाराज जी ये प्रश्न है कि आप लोग के जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति उसके द्वारा हमारे जो बच्चे हैं न्यू पीढ़ी है वो उत्साहित होकर दीक्षा ले रहा है. जैसे गुरु महाराज कह रहे पाल सारथी बैठा है वो भी कह रहा है कि मैं अपने भरत भैया के साथ दीक्षा लेना चाहता हूँ. गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे वो भी अब 64 राउंड चैंट कर रहे. And this way the whole world will be attracted to our movement if we just continue in the same way here in Labasa. जिस तरह लंबासा में कार्रवाई हो रहा है इससे क्या होगा सारा दुनिया आकर्षित होगा कि कैसे न्यू पीढ़ी आप लोग बड़े लोग को देखकर न्यू पीढ़ी भी वही मार्ग पकड़ ले. So as far as initiation is concerned, we're going to speak a little bit about the 10 offenses in chanting and the principles of devotional service and the process of bhakti. गुरु महाराज कहते हैं कि दीक्षा समारोह है मैं 10 नाम प्राप्ति बारे बोलूंगा और कुछ विशेष बात बताऊंगा इस पर. It says one of the first aspects of the process of bhakti, ado guru para ashraya, to accept the shelter at the lotus feet of a spiritual master. बताया गया भक्ति के प्रथम कार्य में यही है कि हम अपने गुरु जी के चरणों में जाकर पहले सदा अर्पित करें. Of course, in one sense, because His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada is the ultimate Shiksha Guru for all of us in ISKCON, we've all accepted Srila Prabhupada's lotus feet as our shelter. और श्रील प्रभुपाद जी वो तो सभी के शिक्षा गुरु हैं और हम सब श्रील प्रभुपाद जी के चरण तले उन पर अर्पित करते हैं. But it is also necessary to accept initiation, which is a, let's say, obligatory process in the practice of devotional service, from a guru who is present on the planet. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के चरण में हम सब तो अर्पित कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन इसका अर्थ ये भी होना चाहिए कि जो जीवित गुरु हैं उनके पास जाकर उनके चरणों में हम अपने आप को भी अर्पित करें. So the way we understand who is a bona fide guru is very easy. It's the person who is a servant in ISKCON of His Divine Grace Srila Prabhupada. बताया गया है कौन देव गुरु है. बहुत सरल है. गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो भी गुरुजन वैष्णव जो ISKCON के भीतर आए हैं वो अपने गुरुजन के सेवा अर्पित किए हैं बस उन्हीं के चरणों में चले. Just like the Vedic literatures describe, Tad Vijanartam Sa Gurumeva Vigachet Samitpani Shrotriyam Brahmanishtam. One must accept the guru, but you have to look for the guru who has those qualities. वेद शास्त्रों में कहा गया है हर एक प्राणी को गुरु को अपनाना चाहिए, लेकिन गुरु में वो दिव्य गुण होना चाहिए तब आप उसको स्वीकार कीजिए. Samitpani basically means the disciple or the guru who is a servant of his guru. That's the first and most important quality. और गुरु का सबसे प्रथम बताया गुण क्या है कि वही गुरु है जो अपने गुरु को दास भाव में सेवा प्रदान किया. That means that his whole sense of identity is simply to please and serve his spiritual master.
यानी कि पूरा विचारधारा ये रह जाता है कि जो भी प्राणी अपने गुरु की सेवा किया हो। Just like in my life, whenever I make a decision, I'm always thinking, what would Srila Prabhupada want me to do? What would Srila Prabhupada say to me? And in this way, I make my decisions. अपने जीवन में मैंने हर समय यही सोचा है कि शिला प्रभुपाद जी मुझसे क्या चाहता है, मैं शिला प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न करूं, बस वही के द्वारा मैं अपना निर्णय कर पाता हूं। And the second quality is Shrotriyam. The bona fide guru must have heard nicely from his guru, and in ISKCON, that means must have heard nicely from His Divine Grace Srila Prabhupada. दूसरा गुण है कि जो गुरु है वो बड़ी अच्छी तरह से एक सुंदर कला होना चाहिए सुनने का, जो अपने गुरु के द्वारा उसने ग्रहण किया है। So just about every day we are listening to Srila Prabhupada's lectures, recorded lectures. जैसे गुरु महाराज कहते हैं, मैं हर समय श्री प्रभुपाद जी के जितना भी रिकॉर्डेड उनकी कथाएं हैं वो मैं श्रवण करता हूँ। Because through sound vibration, one can always keep contact with the guru, whether or not he is geographically present or not, or away. क्योंकि उनके दिव्य शब्दों के द्वारा मैं उनका संग कर रहा हूँ, चाहे वो है या ना है, लेकिन मेरा संग हो रहा है उसके रोज। In fact, it's mentioned that hearing Shrushro Shradananasya Vasadeva Kataruchi Shanmahat Seveya Viprapunyatirtha Shevanat, hearing from the guru is service. बताया गया है श्लोकों में कि एक जो कथा श्रवण करते हैं एक बहुत महान सेवा है। And then the last quality in this verse we mentioned, Samitpani, Shrotriyam Brahmanishtam, is that one must have a guru who never deviates from Krishna consciousness. और तीसरा गुण जो गुरु का है कि कभी वो कृष्ण भावना से वो उड़े ना। So if one finds a guru like that within Srila Prabhupada's society, then one should take initiation from such a guru. अगर कोई प्राणी में ऐसा है तो तुरंत आप जाकर उनसे दीक्षा ले लीजिए। So, and then the guru instructs the disciple in the process of bhakti. और जो गुरु है अपने चेला को उपदेश दे रहा है भक्ति के मार्ग में। Now, bhakti means there's sadhana bhakti, which is comprised of Vaidhi and Raganuga. There's bhava bhakti, and finally prema bhakti. तो जब भी हम भक्ति के मार्ग करते हैं तो उसमें साधना भक्ति है, उसमें रागानुगा भक्ति है और भाव भक्ति है। In the beginning, there's Vaidhi bhakti, which means practice by following very strictly the rules and regulations. शुरुआत में वैदिक भक्ति कहते हैं, मतलब विधि विधान नियम को पालन किया जाना चाहिए। And after some time, Raganuga, you begin to follow and spontaneously and develop your internal relationship with Krishna. वैदिक भक्ति के द्वारा हम रागानुगा भक्ति स्तर पर आते हैं, जहाँ पर फिर निरंतर वो प्रेम हो जाता है भगवान के साथ। And then Bhava Bhakti, you begin to experience all these emotions, which I described the previous 2 days ago when I was in Savu Savu. और फिर उसके बाद में वो भाव स्तर पे चला जाता है, जो गुरु महाराज ने साहु साहु में सुबह के क्लास में वर्णन किए थे। And then Prema Bhakti, the stage where you're ready to do anything Krishna wants and you're disregarding your own likes and dislikes. और फिर उसके भाव के बाद में प्रेमा भक्ति में चला जाता है, जहाँ वो अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान को अर्पित करता, अपना सुख दुख नहीं देखता है, सिर्फ परमात्मा के सुख के लिए हर एक कार्य करता है। So the guru guides one at each and every step in devotional service. जो गुरु रहता है अपने चेला को हर एक स्तर पर उसको मार्गदर्शी कराता है, मार्गदर्शी होता है। And the relationship with the guru is eternal. जो गुरु के साथ रिश्ता है वो नित्य का है, हमेशा का रहेगा। Sometimes the vapu or body of the spiritual master is there, and sometimes the vapu or the body of the spiritual master is not there. कभी-कभी गुरु का जो बापू है, यानी कि इसका जो रूप है, वो रहता है, वाणी रहता है, या तो कभी-कभी ना तो बापू और वाणी दोनों नहीं रहते। But the most important aspect of the guru was his vani or instructions. लेकिन गुरु का सबसे प्रमुख बताया गया है उपदेश कहाँ से वाणी के द्वारा होना चाहिए। Just like the other day, we arrived in Savu and everyone was saying, Jai Guru Maharaj, and I said,
who will actually do what I say? जैसे गुरुदेव कह रहे हैं मैं सब पहुंचा सब कह रहे हैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव और गुरुदेव ने कहा ठीक है गुरुदेव ठीक है लेकिन जो गुरु बोल रहा है कौन करेगा And I was saying that most people, they want a pet guru. क्योंकि सब कोई ऐसा गुरु चाहते हैं जिसको वो लाइक करते हैं They want the guru to stay on the altar but not open his mouth except to take prasadam. वो लोग ऐसा गुरु चाहते हैं कि उसको उल्टा पे हमेशा रहे कुछ बोले नहीं हरि प्रसाद खाए बस And that way they can offer food to the guru and then they can enjoy eating themselves. और वो चाहते हैं कि मैं गुरुदेव को हरि प्रसाद खिला दूं ताकि मैं खाऊं बस यही मेरा जीवन है But Guru Mukha Padmavakya Chitete Kodiyakya, we have to accept the words coming from the lotus mouth of the spiritual master as our very life and soul. बताया गया जो हम लोग रोज सुबह गुरु वंदन में गाते हैं उनके मुखारविंद से जो निकल रहा है वो हमारा मेरा जीवन होना चाहिए Just like Srila Prabhupada told me, you stay in ISKCON and you serve as society. And we have done this, and there's difficulties, challenges, whatever it is, but we stick to that principle. जैसे मेरे गुरु ने जो कहा था बस हम लोग उनके मुखारविंद से जो निकला अपने जीवन में अपना लिया दुख आया सुख आया हम लोग कभी छोड़कर भागे नहीं बस उसको मजबूती से पकड़े रहे So as far as this initiation is concerned, the devotees who are taking initiation are going to be practicing Vaidhi Bhakti. तो आप दीक्षा समारोह में जो बैठे हैं मतलब ये लोग वैदिक भक्ति का पालन करेंगे Now, but another important point is, even when you come to Prema Bhakti, you will still externally practice or show yourself as practicing Vaidhi Bhakti. आप कभी अगर शायद प्रेम भक्ति पर पहुंच जाए लेकिन फिर भी बाहर रूप से आप ये वैदिक भक्ति जो है वो सबको दिखाएंगे कि आप उसको पालन करें It's not that later on you say, oh, now I'm on the spontaneous platform, I don't have to chant, I can eat any damn thing. This is not Krishna consciousness. बताया गया प्रेम भक्ति में पहुंचने के बाद में आप ऐसे नहीं कह सकते हो अब हम प्रेम भक्ति में पहुंच गए कुछ भी खा सकते हैं पी सकते हैं बिना भोग लगा है नहीं ऐसा नहीं है तो आप नहीं अच्छे बात हो Just like the six Goswamis of Vrindavan. Externally, their performance of the rules and regulations, it's described, was like lines on a stone. बताया गया है जैसे छह गोस्वामी का उनका जो भक्ति है वो कैसा है जैसे बताया गया है एक लाइन ऑन अ स्टोन यानी कि एक शेर पत्थर के ऊपर In other words, they were perfect in their execution of what apparently was Vaidhi Bhakti, but of course they were on the highest stage being Nityasiddha devotees. क्योंकि वो एक सिद्ध पुरुष है जो भी वो पालन करते थे वो सही रूप से करते थे तो उससे वो सिद्ध पुरुष हो गए थे Okay, so the first point about those taking initiation is the four regulated principles. और जो दीक्षा समारोह में बैठे हैं पहला चीज कि चार नियम को पालन करेंगे Of course, that's easy. No meat, fish, or eggs, no intoxication, no illicit sex, and no gambling. कि पहला चीज है शराब नहीं मांस नहीं जुआ नहीं परस्त्री संग And the devotees taking initiation today, probably they've never done any of those things. आज जो दीक्षा जो समारोह में बैठे वो तो कभी दारू नहीं पिए मांस नहीं खाए सो They don't even know what those things are. ये लोग जानते नहीं कि है कौन जिसका स्वाद है कैसा It reminds me of one time I was giving initiation to a lady. She was about 90 years old. एक बार गुरु महाराज जी कह रहे हैं मैं 90 साल की एक स्त्री माता जी को दीक्षा दे रहा था Obviously, I did not ask her about the four regulated principles. गुरु महाराज कह रहे हैं मैंने उससे कुछ आचार नहीं किया But these devotees we will, because they're still young and they have to avoid all the attractions that will come before them as they progress in life. वो 90 साल की माता जी उससे क्यों नहीं पूछा विचार कर लीजिए लेकिन ये लोग बहुत युवान हैं इनसे पूछा नहीं Because this is Kali Yuga. क्योंकि ये कलि युग है Many years ago, before Kali Yuga, there was this nice young Brahmin boy like you all are. His name was Ajamil. And simply by seeing some illicit life going on, his whole life was spoiled. क्योंकि ये कलयुग है बहुत साल पहले बताया गया पहले एक
ब्राह्मण पुत्र था, उसका नाम अजामिल था, वो बड़ा महान था, लेकिन यौवन अवस्था में उसने ऐसा देखा जिससे उसने अनुचित कार्य कर दिया। So just because you've been born in the movement, you should not think that Maya will not touch you. क्योंकि तुम इस संस्था में जो आपके माता पिता भागते होंगे उनके द्वारा वहां पर जन्मे होंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि माया आपको छुएगा नहीं। Maya is looking for all of us. माया जो है ना हर एक प्राणी को खोज रहा है। She's looking in the window. एक एक बताया गया है खिड़की में देख झांक रही है। So as soon as we're inattentive, she says, Hari Bol. जैसे हमारा ध्यान स्थिर नहीं रहता है, तुरंत माया देवी कहेंगी हरि बोल। Because she's a devotee, that she chants Hare Krishna. क्योंकि माया देवी भी तो भक्ति है ना भगवान की। And her service is to test your determination. और उनका बताया गया एक ही सेवा है, आपका जो श्रद्धा है भक्ति उसका तुरंत निरीक्षण करना। Especially when you're young, the world looks sort of attractive. क्योंकि जब आप युवान अवस्था में रहेंगे संसार आपको बहुत आकर्षित लगेगा। At my age, the world doesn't look attractive anymore. जब आप गुरु महाराज के उम्र पे पहुंचेंगे ये संसार आपको एक भूल आकर्षित नहीं होगा। It's sort of lost its glow. ये बताया गया है। Isn't it, Vrindavan? But when you're young, it's just like, wow, this is a wonderful world, enjoyment, and you don't want to hear that you're not the body. जब आप युवा अवस्था में रहेंगे आपको आप इतने बोलोगे वाओ, आप उसको आलिंगन करना चाहिए क्योंकि इतना लुभायमान है, इतने आकर्षित आप हो जाओगे इस पर। So you're all very young except for Arjuna, the older Arjuna. आप सभी लोग बहुत युवा अवस्था में हो, सिर्फ जो अर्जुन भक्त है। And there'll be many tests, I guarantee. गुरु महाराज कह रहे हैं बहुत परीक्षा आप सबको देना पड़ेगा। So remember to remain fixed in your performance of sadhana bhakti. That will protect you. आप हमेशा स्थिर रहोगे अपने साधना भक्ति में। As soon as you neglect the chanting, that's it. Maya will take you over. जैसे आप भगवान के नाम जपन बंद करोगे, तुरंत वही क्षण माया आपको अपने बस में कर लेगी। I was recently speaking to one very, very big devotee. He used to be one of the main leaders of the Krishna consciousness movement. And he told me that he neglected his rounds and Maya pulled him away for 35 years. गुरु महाराज कह रहे हैं इस्कॉन में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तर पर था एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति मुझे बता रहा था मैं जैसे भगवान का नाम जपन बंद किया ये माया ने मुझे पकड़ लिया। You won't know what hits you. आप जान भी नहीं पाओगे किस तरह से वो पार करेंगे। It's just like if you're doing this game of boxing, and if you look the other way, boom, you're finished. जैसे लड़ाई के मैदान में जब आप जाओगे और आपके ध्यान जैसे हटेगा, आपके चेहरा पे एक लगेगा, आप बेहोश पड़े रहेंगे। Okay, so be very attentive. So anyway, so always finish your 16 rounds no matter what. हमेशा अपना 16 माला जप कर लेना, चाहे कोई भी स्थिति हो। Since I joined the Krishna conscious movement, I have always finished my rounds every day. गुरु महाराज कहते हैं मैं जब से कृष्ण भावनगर में आया हूँ, मैं अपना हर दिन का जो माला है मैं रोज किया हूँ। And sometimes that meant I had to be very tricky to chant. कभी-कभी मुझे थोड़ा चालाक रहना पड़ता है क्योंकि मुझे जप करना है। Many years ago, I was traveling when I was a brahmachari with a sannyasi. He wouldn't give me time to chant japa. मैं पहले जब ब्रह्मचारी था, सन्यासियों के संग घूम रहे थे, तो वो सन्यासी मुझे समय नहीं दे रहा था जप करने की। So I had to make a trick. When he sent me to go shopping, I took 2 hours to buy a banana. जब गुरु महाराज के सन्यासी भेजता था कुछ खरीदने के लिए, खासकर केला, तो मैं 2 घंटा लेता था केला खरीदने के लिए। And he said, "What happened?" I said, "Well, a lot of traffic." गुरु महाराज कहते थे तो वो सन्यासी मुझसे पूछते क्या हुआ, क्यों देर हुआ? मैं बोला बहुत रास्ते में बहुत मोटर गाड़ी था। Other times, just like everybody else, sometimes I got sick and I had to chant my japa, lying down in bed. But I always finished my japa. क्योंकि मैं बहुत बीमार हो जाता था, लेकिन मैं खटिया पर भी जप कर लेता था, लेकिन मैं अपना
जो नाम से वो हमेशा खत्म कर लें। Remember that. हमेशा याद रखना, Don't sleep unless you finish your japa. सोना नहीं जब तक आपकी जप नहीं खत्म हो। And so to perfect your japa chanting, it's important to understand the offenses to be avoided while chanting. जो आप जप कर रहे हो उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको जो अपराध है हमेशा बच के रहना चाहिए। Especially the first offense, offending, committing offenses, blaspheming the devotees who have dedicated their lives to pleasing and preaching Krishna consciousness. और सबसे बड़ा अपराध है कि जो वैष्णव भक्ति भगवत नाम में अपना जीवन को समर्पित किया और प्रचार करने में उनकी निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। This is called the mad elephant offense. इस अपराध को कहते हैं जैसे एक पागल हाथी बगीचा में फंस जाता है। Here in Fiji, we'll call it the mad cyclone offense. फीजी में कहेंगे, दूसरा रूप से कहेंगे कि पागल साइक्लोन। I don't know, cyclone? जैसे पागल तूफान। Just like the cyclone. We were driving to Sabu Sabu and it tore apart all the palm trees, all the leaves were gone. जैसे तूफान आता है तोड़ फाड़ देता है वैसे वो पहला नाम अपराध हो गए आपके जीवन के हर एक पुण्य को तोड़ फाड़ देंगे। So be very careful. Remember the story of Durvasa Muni offending Maharaj Ambarish. हमेशा याद रखना कैसे दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज जी का अपराध किया था। You do not want the Sudarshan chakra chasing after you. आप नहीं चाहोगे कि वो भगवान श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ जाए। The second offense, of course, is to think that the names of the demigods like Shiva, Brahma, etc., are equal to or independent to the holy name of Lord Vishnu. Lord Vishnu, Ekali Isra, Krishna, Arasabda Vritya, there's one God and everybody else is his servants. आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि भगवान एक ही है और वो एक भगवान जो है वही अपने आप को विस्तार करता है। The next offense is to disobey the order of the spiritual master. तीसरा अपराध है गुरु की आज्ञा करना। Next offense is to blaspheme Vedic literatures or any literatures that glorify God in the Vedic version. कोई भी वैदिक शास्त्रों को जहाँ पे भगवान की गुणगान हो रहा है शास्त्रों के द्वारा उसकी निंदा करना भी बहुत बड़ा अपराध है। Next offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. और पांचवा अपराध है कि भगवत नाम महिमा को कल्पना समझना, काल्पनिक रूप से इसको समझना। And the next offense is to give some perverted, materialistic interpretation of the holy name. And then one of the most dangerous offenses is to commit sins on the strength of chanting. That means you do some sin, then you go Hare Krishna, free of sin, sin again, Hare Krishna, sin, Hare Krishna. It doesn't work. That's like the Catholic method of confessing once a week and the rest of the week being a nonsense. The next offense is to consider the chanting to be like one of the rituals found in the Vedic Karma Kanja section. Just like we have different Karma Kanja rituals, like if someone dies in the family, you're not supposed to get married for a year. And of course, if people keep dying, you could remain brahmachari your whole life. It's a good system. So this ritual, and no rituals can be equated with the Hare Krishna or chanting the Hare Krishna. So in other words, it may be Pita Paks or Deva Paks where you have all these rituals, you still chant during that time of the year. उसमें भी आप कर्मकांड है सब उसमें भगवान के नाम को बराबर नहीं समझना वो परम है।
The next offense is to preach the glories of the Lord to those who are faithless. In other words, those who might commit offenses. नास्तिक व्यक्ति को भगवत नाम महिमा बतलाना। You have to be careful how much you explain to people. आप बहुत सतर्क रहिए कि कितना आप दूसरे को बता रहे हो। And then the last offense is to not have complete faith in the chanting of the holy names and maintain material attachments. दसवां अपराध है कि भगवत नाम में पूर्ण श्रद्धा नहीं और उसमें लगाव नहीं और सांसारिक कार्य में लगाव है। So gradually we should be attempting to give up our attachments to this world. धीरे-धीरे हमें चाहिए जो सांसारिक लगाव है वो सब छूट जाए। And of course it's also offensive to be inattentive while chanting. और बताया गया है भगवत नाम में ध्यानपूर्वक ना भी जप करना भी बहुत बड़ा अपराध है। So that's the negative, but there's the positive in chanting Hare Krishna. You should study on a regular basis the Shikshashtaka left to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. और वो सब जो है वो बताया गया नेगेटिव तरफ से पॉजिटिव में क्या है चैतन्य महाप्रभु का जो अष्टकम है कि वो हमें अच्छी तरह ध्यान करना है समझना है। And if you do these things with great determination, avoiding Krishna's illusory energy, following the order of the Guru, it is guaranteed that before the end of this life you'll go back to home, back to God, and you will see Krishna in this very life. और ये जो शिक्षा में अच्छी तरह समझने के बाद में दृढ़ता से इसके ऊपर इसको निभाओगे और उस पर चलोगे और गुरु की आज्ञा पालन करोगे तो मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ आपका भगवान के धाम हमेशा के लिए खुला रहेगा। Just like Lord Brahma, he was able to shake hands with Krishna. जैसे ब्रह्मा जी जो है वो जाकर भगवान श्री कृष्ण से हाथ मिला सकता है। And you will be able to shake Krishna's hand one day. एक दिन आप भी ये मार्ग में रहोगे आप जाकर कृष्ण भगवान से हाथ मिला पाओगे। Maybe even do a high five with Krishna. आप कृष्ण भगवान के पास जाकर हाई फाइव कर सकते हो जैसे गुरु महाराज बच्चों के साथ करते हैं। Okay, so then we'll continue with the ceremony. We should give I guess the names of the baby first. Babies come first. बलि महाराज जी जो है और Nandini, yeah. आनंदनी का बेटी हुई है और दुर्भाग्य रहा कि गुरु महाराज संग प्रेम रहा था तो मैं इसको बताया कि क्या बोल है। So I actually checked the Kundali and everything like that, did a lot of research, and found out that the baby's name has to begin with a ki, ki. Actually, Kip. उसका कुंडली खोजे क्योंकि जो ये महीना में हुआ था और कुंडली खोजने के बाद में गुरु महाराज ने जो पहला शब्द आना चाहिए की से शुरू होना चाहिए। And the baby was born under the Shravana Nakshatra. तो ये श्रवण नक्षत्र में वो पुत्री का विवाह पैदाइश हुआ। So that's very auspicious, actually, the Shravana Nakshatra. It's the most auspicious nakshatra. नक्षत्र रहता है तो बहुत मंगलमय है, बहुत मंगलमय रहता है। Okay, so why don't you bring the baby forward? He wants to be the center of attention. There's always a problem when there's a firstborn and then another child's born after that. The firstborn gets very frustrated that he's not the center anymore. That happened with me because I was the firstborn. गुरु महाराज कहते हैं जब पहला बच्चा होता है ना फिर उसको सेकंड जब दूसरा होता है तो पहला बच्चा जो है उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन वो रह नहीं जाता है। गुरु महाराज कहते हैं मेरा साथ भी ऐसा होता है मैं पहला था बाद में दूसरा हुआ मेरा अटेंशन हट गया। And therefore I became very cheeky. I was playing tricks all the time just to get more attention. गुरु महाराज कहते हैं उस समय मैं फिर बहुत बदमाश हो गया और चालाकी करता था कि मेरा अटेंशन जो है सब खत्म। Okay, so her name is ready. Would you give me the baby? You want me to hold you too? So, her name is Kishori Devi Dase. And Kishori is a name of Srimati Radharani. And Krishna
is known as Krishna and Radharani Kishore Kishori. राधा रानी का Kishori नाम है Devi Dasi ki किशोरी। jai. कृष्ण भगवान का नाम है Here we go. किशोर। किशोरी देवी दासी Okay. Any more babies? नेक्स्ट यू Next year. Okay, next year. राधा नाम Very nice. All right, so then I guess we'll go to the oldest participant, तो गुरु महाराज के अर्जुन. सबसे वृद्ध है, मैं इसको बुलाने जा रहा हूँ and the old Arjun, not the young Arjun. जो अर्जुन है वृद्ध अर्जुन है गुरु महाराज उनको आगे बुला रहे हैं। Okay. Help him. Haribo. So now you are officially Vanaprast, which means you don't have to go to the forest. अर्जुन दास जी जो है वो आपसे वनप्रस्थ हो जाएगा, इसका अर्थ नहीं कि इसको वन जाना पड़ेगा। But you dedicate your life to serving Krishna, your body, mind, and words to serving the Supreme Personality of Godhead. No other interest other than serving Krishna. अपने शरीर से, अपने मन से और अपने Okay. वचन से सिर्फ कृष्ण भगवान को संतुष्टि करने में लग जाइए और कोई आपके पास और धन नहीं होना चाहिए। Okay, next is Shimal Das. और श्यामल दास जो है वो दीक्षा ले रहे हैं, उसकी माँ यहाँ शिविदा है और उसके भैया मधु है कि नहीं है और वो मनोज जी के बेटा है और श्यामल दास बहुत अच्छा लड़का है। आप देखेंगे इस मंदिर में बहुत अच्छे से सेवा करता है, बहुत अच्छा मैडंगा बजाता है और कीर्तन भी गाता है और वो भी एक नेस जो है वो पढ़ाई कर रहा है। मेरे ख्याल से पहला साल में स्कॉलरशिप पे भी है और 3 साल बाद नेस भी बन जाएगा। बहुत डेडिकेटेड है, सिंसियर है, इसलिए भगवान ने इसको स्कॉलरशिप दी। जैसे यहाँ इसका मामला प्रदान के जैसे शरणागत होंगे भगवान तुम्हें देखभाल कर लेंगे। तो हमने कभी सवाल तो नहीं देखा कि लड़ते झगड़ते करते और वो अर्जुन ने बहुत प्रेम भी मैंने हमेशा देखा और आज दोनों मित्र संग दीक्षा ले रहे हैं। Okay. Another mala. Just what I wanted. So what are the 4 regulated principles? Okay. That includes kava, right? He probably never took kava his whole life, but that's all right. All right, so you get the beads with, and how many rounds? Get no rounds? 16 rounds. Minimum. And 25 rounds on If you can, Ekadasi, but 16 at least, minimum. So you get the beads with your right hand, and I'll change your name. Your name now is Shri Hari Das. Shri Hari Das ki jai. Haribo, Shri Hari. Of course, Shri indicates Radharani. आज से इसका नाम श्यामल तो हरे कृष्ण So it's Radha, it's basically Radha Krishna Das. श्री हो गया मतलब राधा रानी श्री हरि दास। Das. श्री हरि दास Okay, and next, the child Arjuna. Oh, the man Arjuna. और दूसरा अर्जुन है वो दीक्षा ले रहा है। Now, Parthasarthi can be next. He's next. Parthasarthi, sit down. Vijay, he can come next. He's next. I'll call him next. Don't worry. I already have it planned. He really wants attention, I tell you, this guy. That's what happens when you're the firstborn. You just go crazy when there's someone else in the house.
Before he had a sister, he wouldn't even come near me. And now he's running after me for attention. To see the difference. Okay. So, Arjun. आप सभी लोग जानते हैं अर्जुन को, and born vegetarian and devotee. And the good part I've seen Arjun has been, he always takes care of Vaishnava. Yeah. I've seen him. If there is any hard job, he wants to take it, but he wants to release them. That's a very good part of him, and I've always noticed him that he's been doing. And another good part is that he's been always attending Bhagavad wherever I go. And when we started Sahu, he was sleeping on my hand at Mari Muthu's veranda. I remember, but he was always there. And the good part is that I've seen him, noticed him. He has become a very good singer. He's a better singer than me. The guy I'm learning from him. So that's a good point of being Krishna conscious and taking mercy of all the Gurujans that are coming. Just taking their blessing, you will be automatically brilliant. All right. So, what are the four regulated principles? Meditating, no gambling, no illicit sex, no intoxication, daily 16 hours, Yeah. meat and grains. Okay, very good. And so, of course, I'm changing part of your name, not the whole name, because Rasa Vihar really wanted to keep Arjuna. So, your name now begins with your right hand is Arjuna Saka. Arjuna Saka Das. That's of course the name of Krishna, because who is the Saka of Arjuna? Krishna. तो अर्जुन सका जब बोलोगे तो कौन हो गया? Krishna. तो आज से इसके नाम अर्जुन सका दास बोलोगे? Okay, and then Parthasarthi. The upper basin is the Prabhupada. He's really enthusiastic. You know, What? When I give morning class Yeah. Really? तो भारत में है because भैया दीक्षा ले रहा है तू नहीं बोले भैया और काय तुम दीक्षा ले रहे हैं because गुरुदेव हमारा नाम है इस बात Jai Haribol. Haribol. So you know the four regulated principles? Yeah. That's good. He doesn't. Yeah, I accept that he knows them. That's all. He knows them? केकड़ा नहीं खाता फिश नहीं खाता दारू नहीं पीता जीना नहीं खाता है पत्ता नहीं खेलता Very good. So you chant as many rounds as you can every day. It's serious. It's serious. He's actually being inspired. And so it's very nice. One day you'll be taking more initiation. You'll be serving the deity. You'll be chanting. Very, very nice. So your name is Partha Sarthi. Okay. The beads? Do we have any extra beads? No. No, it's not necessary. Let me give him a garland, Mala. Here, you get this. Haribol! That's very nice. Okay, so we can continue now with the fire sacrifice.